Welcome back to day 2 of the One Battleground Virtual Media Day. Joining us now is the Indian Tigress, Ritu Phogat. Ritu, thank you so much for joining us. How are you doing today? Yeah, I'm good and I'm excited for 30 July. Ritu, our first question here is from Tom Taylor of Bleacher Report. You obviously felt you won against Bing Nguyen in your last fight. Do you think a win over Lin Heqin could erase that disaster? Sorry again. Let me repeat the question. Yeah. You obviously felt you won in your last fight against Bing Nguyen. Do you think a win over Lin Heqin can erase that disaster? रितु हाय नताशा बोल रही हूँ. Okay. हाय रितु, तो वो पूछ रहा है बिग विन के अगेंस्ट फाइट हम जीते नहीं थे लास्ट टाइम, तो जो इतना गलत हुआ था उसको क्या आप बेटर कर पाओगे ये फाइट के जीत के साथ? बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस मैच में मतलब जितना जल्दी हो सके मैं इस फाइट को फिनिश करूं और बिल्कुल ये सभी को ये मतलब शो कराऊंगी कि मैं बेस्ट हूं. Okay. Gianni, hi. So Ritu says yes, her efforts will be focused on finishing the fight in time to prove her mettle and to prove that that she is a winner and she deserves every bit of where she is. Thank you for that. Our next question here will go to Dylan Bowker of My MMA News. Dylan. Hey there, appreciate you making some time for my call here. I'm just curious because I noticed Ritu had the tweet the other day just about, India getting that medal in the Olympics. I'm kind of wondering how much seeing India succeed in the Olympics is inspiring Ritu ahead of her upcoming performance here. ओके ऋतु, वो बोल रहे हैं आपने रिसेंटली ट्वीट किया था कि इंडियंस ओलंपिक्स में जीत रहे हैं, सो वो आपको कितना इंस्पिरेशन देता है ना, ये इंडियन जो एथलीट्स है, इंडियन प्लेयर्स है जो ओलंपिक्स में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, वो आपको कितना प्रेरित करता है यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल, ये चीज काफी मोटिवेट करती है कि जब अभी लास्ट जब हमारा वेट लिफ्टिंग में मेडल आया तो वो चीज हमें और भी ज्यादा पुश करती है कि हाँ कि उन्होंने मतलब देश का नाम रोशन किया, अब हमारी बारी है कि तो हमारी बारी है, हम भी अपने देश को गर्व महसूस कराएं, सभी भारतीयों को गर्व महसूस कराएं. तो बिल्कुल वो चीज काफी मोटिवेट करती है और हम एक दूसरे को देख के काफी कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को देख के काफी मोटिवेट होते हैं, तो ऑफकोर्स वो चीज मुझे मोटिवेट करती है. Yes. So Ritu says that indeed it motivates her a lot. In fact, we've just won the weightlifting medal, and that sort of encourages her to perform better. So when the Indian athletes are making the country proud at the Olympics, Ritu feels that it's a story for her to emulate at the one championship circle as well. So definitely it plays a great role as a motivating agent for her. And sorry, please go ahead. Oh, I was just going to say, as a quick follow-up, if I could, just, fighting an opponent on an 11-fight win streak here. Just what is Ritu's thoughts on Lin Chin as a fighter overall? रितु वो बोल रहे हैं लिन हेकिन जो आपकी फाइटर है, इतनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? बिल्कुल, वो मतलब उसका स्टैंडिंग गेम है वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका एक्सपीरियंस है वो मेरे से ज़्यादा है. तो बिल्कुल जब मैं रिंग में जाती हूँ, जब मैं केज में जाती हूँ, तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती कि मेरे अपोनेंट चैंपियन है और उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. मैं वहाँ पे जाके अपना बेस्ट से बेस्ट देती हूँ. Okay, so Ritu says yes, definitely the opponent's standing game is really strong and she brings more experience to the table than Ritu Phogat. But then Ritu does not ponder too much on the opponent's strength. For her, every opponent is the same and all she's focused on is giving her best while she's in the circle. Appreciate the insights and thanks for the time. उन्होंने आपको thank you बोला है रितु. Thank you. A little gentle reminder to the media here to ask questions. You can raise your hands on Zoom, or if you prefer to type in your questions, please do that, and I will read them out to Ritu. Our next question will go to Jack Gotzel of Top Soft Sports. Jack, please go ahead.
Ritu, your opponent has said that she's been working on her takedown defense and wants to keep this fight on the feet. How do you think your striking compares to her? Do you think you can outstrike your opponent? तो वो बोल रहे हैं कि आपके अपोनेंट ने बोला है दैट वो अपनी टेक डाउन पे काम करती रही है, तो वो पूछ रहा है आपका स्ट्राइकिंग कैसा है एंड क्या आप उसको उसको गिरा पाओगी? बिल्कुल इस मैच में मतलब सभी को काफी रोमांचक होने वाला है मैच, और बिल्कुल इस मैच में आप मेरी स्ट्राइकिंग और भी बेटर देखेंगे। तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मतलब इस टाइम सभी मतलब एक अलग ऋतु को देखेंगे बिल्कुल। Okay. So she says, it's going to be an interesting match for the fans. And she's worked on her striking, and she says that the audiences will get to see a completely different version of Ritu in this game. Ritu, in this fight, are you predicting a finish in this fight? And if you are predicting a finish, is it going to be by submission or by knockout? तो ऋतु वो पूछ रहे हैं क्या आप जब आप फिनिश को आप सोचते हो कि आप ये खत्म करोगे, तो ये सबमिशन से करोगे या नॉकआउट से करोगे? आपका क्या होने वाला है तरीका? मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये मैच मैं जितना जल्दी हो सके मैं बिल्कुल इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहूंगी, चाहे वो नॉकआउट से हो चाहे वो को से हो, तो बिल्कुल मैं जितना जल्दी होगा इसको मतलब जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहूंगी। Okay. She says that, even if it's by knockout or submission, um, her main goal is to finish it much before time. She will try her best to finish the match at the earliest. Thank you very much for your time. Thank you, Jack. Our next question goes to Drake Riggs of My MMA News. Drake, floor is yours. Good to see you, Ritu. Just to springboard off of Dylan's question about the Olympics, I'm just curious if you ever had any hopes to compete at the Olympics yourself when you were, getting into wrestling. तो वो पूछ रहे हैं क्या आपका कभी सपना था ओलंपिक्स में प्ले करने का जब आप रेसलिंग में थे तभी? बिल्कुल, क्योंकि बचपन से हमें मतलब रेसलिंग के बारे में सिखाया। बचपन से हमें मतलब जब मैं 8 साल की थी तभी से रेसलिंग पापा ने हमें सिखाई, और बिल्कुल एक ही गोल दिखाया था पापा ने उस टाइम कि ओलंपिक में गोल्ड लेके आना, सिर्फ गोल्ड से नीचे कुछ भी नहीं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे भी ओलंपिक रिंग है, तो बिल्कुल मेरा ड्रीम है। तो बिल्कुल डेफिनेटली मेरा ये भी सपना है कि मैं एक दिन ओलंपिक में जरूर जाऊंगी। ओके, सो यस ऋतु, जो आपने रिंग बोला टैटू है कि क्या है वो? टैटू। दिखाना एक बार। ओके, ठीक है, हाँ। सो यस, शी सेज दैट yes, since the time she's been a child, she's been a kid, her dad's taught her wrestling with only one dream, that she has to represent the country at the Olympics someday and win nothing less than a gold at the Olympics. So she also dons an Olympic tattoo on her finger, and she aspires to be at the Olympics someday, and hopefully she will. All right, very cool. And as for this fight, though, with Lin, do you consider this the biggest fight of your career to this point? क्या ये आपके करियर का सबसे बड़ा फाइट होने वाला है? मेरे लिए मेरी हर ओपोनेंट जो है मेरे लिए मेरे लिए हर फाइट मेरे लिए बड़ी है। तो बिल्कुल जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ तो बिल्कुल टॉप की फाइटर से मेरा मुकाबला हो रहा है, तो बिल्कुल ये भी मेरे लिए टफ ही है। मेरे लिए हर अपोनेंट टफ है और मैं मेरी हर अपोनेंट की रिस्पेक्ट करती हूँ। Yes, she says that she respects every opponent that she gets to fight, and as she keeps climbing up the ladder, she's facing some of the A athletes, some of the A fighters in the circuit. And yes, she thinks that every opponent is a toughie to crack. So she's always ready to face a challenge, and yeah, she treats every opponent equally, and she thinks every fight requires as much efforts and as much practice and training. Well said. And, do you think that the outcome of that fight with B motivated you a little bit extra, all that much more to help you improve and get better because it was, a loss on your record, even though, maybe it shouldn't have been. But do you think that kind of helped the fact that that was the outcome? I'm sorry, can you come again?
Do you think that because of the fact that she, technically got a loss on her record, that kind of helped motivate her more to improve at a quicker pace and get better for this next Sure. fight? ओके श्योर सो रितु वो बोल रहे हैं कि आपकी जो लास्ट फाइट में हो गया आपके साथ, क्या वो आपको ज्यादा प्रेरित किया कि अपने आप को थोड़ा बेटर करो, अपने आप को थोड़ा और कड़क बनाओ और उतरो भले ही सर्कल में? बिल्कुल हम हर मतलब हर मैच से कुछ ना जीतते हैं। जब हम जीतते हैं तो भी सीखते हैं, और जब हम हारते हैं तो स्पेशली जब हम हारते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बिल्कुल उस लास्ट हार ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है और मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। Yes, she says while winning teaches you, losses leave you with invaluable lessons. And certainly, the disaster at the last fight has definitely motivated her and encouraged her to keep getting better at her game. And she is going to put her best self forward during this particular fight. So, yes, it has made her stronger as both a person and an athlete. Understandable. And last thing for me, are you hoping to get back in the tournament if possible, Ritu? तो वो पूछ रहे हैं कि आप टूर्नामेंट में आपको क्या हेल्प कर रहा है टूर्नामेंट में वापस आने के लिए? बिल्कुल मैं यही चाहूंगी कि मैं इस मैच को जल्दी से जल्दी फिनिश करके और अपने आप को प्रूव करूं कि यस मैं ऑटम वेट में बेस्ट कंटेंडर हूं, और बिल्कुल मैं ग्रैंड प्रिक्स डिजर्व करती हूं। और अगर मेरे को कुछ भी मतलब अगर मेरे को किसी और से भी फाइट लड़नी पड़ेगी ग्रैंड प्रिक्स में जाने के लिए, तो बिल्कुल मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूं। Sure. Ritu is currently focused on just proving that she deserves every bit of Atomweight Grand Prix, and even if it requires her to fight some other athletes, she's got her game face on and she's ready to tackle them. All right. Thank you and best of luck. थैंक यू। Our next question will go to Chris Mancuso of Tops Off Sports. Chris, please go ahead. We're going to move on to this next one now. This next question is from Anu. Oh, it just gave me the ability to unmute, Go Gani. ahead. Sorry, please go Thank ahead. you. It didn't come up at first. My apologies. Ritu, I wanted to ask you, you have you're in one championship here. Being from India, Arjun Buehler wins the heavyweight title. How did that, resonate with the people back home? And what did you take from that? Were you able to take any inspiration from that to draw to your own title journey? तो वो बोल रहे हैं कि आप इंडिया से हो एंड आप अर्जुन बुलर है जिसने हेवीवेट टाइटल जीता था, तो आपके जो देशवासियों है उन्होंने वो कैसे लिया और वो आपको कैसे प्रेरित करता है और आपने वहां से क्या सीखा है आपके जर्नी में? बिल्कुल वो चीज अर्जुन भुल्लर का मतलब वर्ल्ड चैंपियन बने तो वो बिल्कुल वो चीज़ हमें और भी मोटिवेट करती है और भी ज़्यादा पुश करती है कि हाँ मैं भी एक दिन मतलब अर्जुन भुल्लर की तरह इंडिया के लिए वुमेन कैटेगरी में बेल्ट लेके आऊंगी, और बहुत से जो इंडिया में बहुत से जो एमएमए में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक रास्ता ओपन कर रही हूँ। तो बिल्कुल वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है और बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मैं भी जल्दी से जल्दी वुमेन वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनूं और जो बहुत सारे लोगों की होप है उनके उम्मीदों पे खरा उतरूं। So she says yes, definitely Arjun Bhular's win was taken really well from her fellow Indians, and it sort of pushes her to be like him in the women's category someday. And it truly is inspiring. And she basically wants to encourage more Indians, especially women, to take on to the MMA space and come out and represent their countries. So yes, it's truly been inspiring and motivating for her. That's excellent. Thank you, Ritu. Best of luck. Thank you. This next question is from Anu Rag Mitra of Sportskida. Winning and losing are an integral part of sport. However, now that the pressure of remaining undefeated is off your shoulders, do you feel lighter heading into your upcoming fight? तो ऋतु
उन्होंने बोला है आपको कि जो हार और जीत होती है वो स्पोर्ट्स का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है। तो बट क्या ये फाइट के लिए आपका जो प्रेशर है यू नो अनडिफीटेड रहने के लिए कितना है वो प्रेशर, और आप कैसे टैकल करते हो उसके साथ? बिल्कुल, मैं इस मैच में मतलब मैं किसी मैच में प्रेशर नहीं लेती, क्योंकि मुझे अपनी जो भी मैंने ट्रेनिंग की है, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे बिलीव होता है, और मैं वहाँ पे जाकर मतलब एंजॉय के साथ जो अपना मैंने जितने दिन ट्रेनिंग की है, तो मैं वहाँ पे जाकर अपना 100% देती हूँ। तो बिल्कुल मैं मैच से पहले कोई भी प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेती। Yeah, so she says that Ritu doesn't really consider anything to be stressful, or she doesn't allow anything to pressure her, and all she does is she completely believes in her training, and she has full faith in her capabilities and her training, and she goes and she delivers optimally when she's in the circle, so nothing sort of stresses her out. Our next question will go to Ali Asgar of Free Press Journal. Ali, please go ahead. या हाय रितु। हेलो। लास्ट वीक प्रिया मलिक ने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और काफी यंग गर्ल्स इंस्पायर हो रही है फोगट सिस्टर्स को देख के, और एमएमए का भी फ्यूचर ब्राइट लग रहा है कि काफी यंग गर्ल्स एमएमए को लेगी, को चूज करेगी आपको देख के। तो ये आपको लॉन्ग रन में एमएमए के लिए कितना अच्छा लग रहा है और आपको पर्सनली कितना मोटिवेटेड फील होता है कि आपको देख के यंग गर्ल्स इंस्पायर होके रेसलिंग चूज कर रही है? बिल्कुल, ये चीज़ मतलब ये चीज़ काफ़ी मतलब मैं भी खुशी मिलती है कि हाँ, मेरे से मतलब हम सभी बहनों से कोई ना कुछ सीख रहा, तो बिल्कुल हम अगर जो हमने सीखा है तो उसको देखकर अगर हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात एक मतलब हमारे लिए और क्या होगी। तो बिल्कुल मैं उसी दिन के लिए लगी हूँ कि जो मैंने सीखा है, मैं अगर वो किसी को सिखा पा रही हूँ, तो सबसे खुशी की बात वही चीज़ है मेरे लिए। और बिल्कुल मैं चाहूँगी कि अभी मैं देख रही हूँ कि एमएमए इंडिया में मतलब काफ़ी ये गेम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और आने वाले कुछ सालों में मैं इस गेम को मतलब टॉप लिस्ट में देख रही हूँ। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मैं अपना यहाँ पे अपना बेस्ट से बेस्ट देकर जो भी एमएमए में जो भी लड़कियाँ अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए एक रास्ता ओपन कर दूँ। और एक और सवाल रितु जी, विनेश फोगट के चांसेस के बारे में आपका मैसेज क्या है उनको ओलंपिक्स में? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जो भी तूने हार्ड वर्क किया है इतने सालों से, तो वहाँ पे जाके उस जर्नी को एंजॉय करें और अपना बेस्ट से बेस्ट जितना हो सके अपना 110% दें, और फिर मेडल बिल्कुल आपसे कोई भी नहीं ले सकता। और लास्ट मैच में जब हार के बाद बिग विन से आपने क्या सीखा कि ये हार क्यों हुई? आपने रिव्यू किया होगा मैच को, तो आपने एक रीजन ढूंढा कि ये रीजन की वजह से ये हाथ से फिसल गया मैच? अ, अ, अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे इतना पता है कि लास्ट मैच में बिल्कुल मैं वो मैच जीती हुई हूँ, और लेकिन हमें मतलब जज के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और मैं उस की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैंने उस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखा है, तो बिल्कुल मैं ये चाहूँगी कि जो मैंने लास्ट मैच में मिस्टेक की और तो बिल्कुल मैं अपने आने वाले मैचों में नहीं चाहूँगी कि मैं अपना जो भी डिसीजन है वो जज के हाथों में जाने दूँ। थैंक यू। थैंक यू। Thank you for that. Our next question will go to Ranjith Rajendran of Locker Room. Hi, Ritu. So just want to say, like, this is a big weekend for your family. You will be competing against Lin at one battleground, and your cousin will be going to compete in the Olympics, Vinesh. So how is the atmosphere in your family currently like? ऋतु वो पूछ रहे हैं आपके फैमिली में एटमॉस्फेयर करंटली कैसा है। विनेश है ओलंपिक्स में जारी है जो लड़ने के लिए, तो राइट नाउ फोगाट फैमिली के बारे में बताओ, कैसा है एनवायरनमेंट वहाँ पर? बिल्कुल सभी को मतलब विनेश, बजरंग और सभी को काफ़ी एक्साइटेड है उनके मैच के लिए। ऑफ कोर्स वो मेरे मैच के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो बिल्कुल अगर मैं मेरे पापा की बात करूं तो वो मुझे हर दिन फ़ोन करके मुझे मोटिवेट करते हैं कि वहाँ पे जाके मतलब अपना 100 देना, और मतलब कुछ टेक्निक बताते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं। और बिल्कुल जो भी मैं मैच से पहले भी पापा से बात करके जाती हूँ, तो बिल्कुल मैं उनको फॉलो करती हूँ। और
बिल्कुल इस टाइम पे सभी की मतलब सभी एक्साइटेड है मैच के लिए और बहुत सारी उम्मीदें हैं सभी को मुझसे, विनेश से, बजरंग से, सभी से. Sure. So, Awesome. you want me to translate that for you? Yes, yes, please. Okay. So she says that Vinesh, Bajrang, who are at the Olympics to represent the country, as well as Ritu Phogat, who is at the One Championship. Because of them, there's a lot of excitement in the family. Everyone's in high spirits. In fact, her father keeps calling her up every day, and he keeps motivating her. He keeps inspiring her to perform well at one championship. He keeps sharing a lot of techniques. So yes, there's a lot of excitement towards each other's game at their respective tournaments. Awesome. Ritu, one more question. So, what are the biggest takeaways that you had from the fight with B last fight in your last fight? Okay. रितु सबसे ज्यादा आपने क्या सीखा जो बी के साथ फाइट हुआ था उससे? बिल्कुल सबसे ज्यादा मैंने यही सीखा कि कोई भी डिसीजन जज के हाथ में बिल्कुल भी नहीं जाने देना है. उससे पहले या तो मैच को करो या मरो. Okay. So she thinks that it's a do or die situation for the current game, and she wants to finish the game in time to make sure that the decision is out loud and clear, and it's clear for everyone to see, and that she doesn't give the power to the judges to take a call on her performance. Awesome. Thanks a lot, Ritu, and all the best for your fight. Thank you. We have now a couple questions from Manish Kadam of Times of India. Manish, please go ahead. Hi Ritu. Hi Manish. रितु 3-4 चीजें आपसे जाननी थी. क्या आप टोक्यो ओलंपिक फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हो तो क्या इंडियन एथलीट्स ने अभी तक जो परफॉर्म किया है वो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है? बिल्कुल मैं बिल्कुल हर रिजल्ट देख रही हूँ और जितना पॉसिबल हो रहा है तो मैं जैसे स्ट्रिंग देखती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं होता लेकिन मैं फिर भी मेरे से जितना पॉसिबल हो लेकिन मैं हर रिजल्ट देख रही हूँ आज किसका इवेंट है और क्या चल रहा है. तो बिल्कुल अभी तक तो अगर बात करें तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी. मेरे को मतलब स्ट्रिंग में भी मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन हमारी इंडियन टीम काफ़ी अच्छा कर रही है और जैसा हमने सोचा था वैसे कर रहे हैं. मतलब कुछ एथलीट चल रहे हैं तो मेडल की तालिका में तो बिल्कुल और बहुत जल्दी वो बिल्कुल देश के लिए मेडल लेके आएंगे. Excuse me, guys. Sorry for cutting in. Manish, can you please ask the questions in English, please? Sure. Okay, so Ritu, two members of your family, that is Vinesh and Bajrang, are currently in Tokyo. What are your expectations from them? Any success mantra or message you would like to give it to them? बिल्कुल मुझे ही नहीं पूरे देशवासियों को विनेश और बजरंग से मतलब गोल्ड मेडल की उम्मीद है. और विनेश जैसे लास्ट ओलंपिक में भी मेडल से चूक गई थी इंजरी के कारण तो बिल्कुल सभी को है कि इस बार वो ओलंपिक में गोल्ड लेके ही आएगी और जो मेरे पापा का सपना है वो बिल्कुल पूरा करेगी. तो बिल्कुल मुझे भी पूरी और मैंने मतलब मेरी दोनों से बात हुई और बजरंग से भी मेरी बात होती रहती है. मैंने बस यही कहा कि अपना वहाँ पे जाकर जो भी हार्ड वर्क किया है वहाँ पे जाकर अपना बेस्ट से बेस्ट देना. Okay. And yeah, Natasha, can you please translate? Yes. So Manish, she says that that both Vinesh and Bajrang, there are a lot of hopes pinning on them, and in fact Ritu keeps talking to them every day, and she keeps sort of encouraging and motivating them to perform well at the Olympics. And Bajrang had an injury in the last Olympics, so Vinesh had an injury in the last Olympics, so there's a lot of there are a lot of expectations from her for the current Olympics, and they're constantly in touch with one another, giving pep talks to each other and encouraging one another to put their A faces on. Okay. And Ritu, how do you see the progress of your younger wrestler, especially Sonam and Anshu Malik? जो ऋतु पूछ रहे हैं जो यंग रेसलर्स है सोनम एंड अंजू मलिक, उनका प्रोग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मैंने दोनों के मतलब क्वालिफाई में दोनों का मैच देखा तो वो आउटस्टैंडिंग था. मैं काफ़ी मतलब काफ़ी
इंस्पायर हुई, मतलब उनको देख के कि मतलब इतनी यंग एज में इतना टैलेंट, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल वो भी मतलब सभी को मेडल ओलंपिक में, मतलब इतनी कम उम्र में और कम एक्सपीरियंस में, बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मतलब मेडल ला के पूरे देश को चौंका देंगे और पूरे देश को गर्व महसूस कराएंगी. So yeah, Ritu says that she had watched the qualifying match and she thinks that their performance were outstanding, and she was completely bowled over by the way they fought. By the way they fought their opponents, and she thinks that they're really young. They don't even have as much experience, but they're there making the country proud, and she's hopeful and she's sure that they will bring the medal back home. Okay. Ritu, how confident are you for your next fight? Your last match was probably in May. So how do you spend time if not into training? ओके रितु, आप नेक्स्ट फाइट के बारे में कितने कॉन्फिडेंट हो, और आपका लास्ट मैच था मई में, तो आप किस चीज पे टाइम स्पेंड करते रही हो मई से लेके अभी तक? बिल्कुल मैंने अपने स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा वर्क किया है, तो बिल्कुल मैं इस मैच के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, और आप सभी मतलब 30 जुलाई को बिल्कुल आप सभी को मतलब एंजॉय करेंगे मैच को, और एक बिल्कुल यही कहूँगी कि आप एक अलग ऋतु को देखेंगे सर्कल में. Okay, so she says that she's completely ready to take down on her opponent in this fight, and she's been working very relentlessly on her striking game, and you're going to see a completely different version of Ritu in this fight, and it's going to be an interesting watch for all the MMA fans out there. Okay, my last question. Ritu, away from home after 2 years of COVID, when does Ritu land in Delhi next? रितु, दिल्ली में कब पहुंचोगी? 2 साल से दूर रही हो फैमिली से आप. बिल्कुल, मैं भी मतलब अपने फैमिली को काफ़ी मिस कर रही हूँ. मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं. सिस्टर की वेडिंग मिस की है, और अभी बबीता को मतलब सेकंड वाली सिस्टर को बेबी भी हुआ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेक्रीफाइस की हैं. लेकिन मेरे पापा हमेशा यही बोलते हैं कि जब भी कि वहाँ पे किस एम के लिए गई है, अपना मतलब वही टारगेट रख और सभी चीज़ों को भूल के हम वहीं पे मिलेंगे. तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि मैं बेल्ट के साथ अभी वहां पे जाऊं. तो अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है इंडिया जाने का. Okay, so she says, yes, she's indeed been missing her families, and she sacrificed a lot in the last 2 years. She's missed some personal milestones, family milestones and occasions. Her sister got married, one of her other sisters delivered a baby, and she was not able to be there in person. However, whenever she talks to her dad always says that no, with every win, it's going to be worth the sacrifice. So right now, she doesn't plan on coming to India anytime soon, and she's hopeful that the next time she lands in Delhi, she's got the belt with her. Thanks, Ritu. Thank you. Sorry about that. We have 2 more questions here before we let you go, Ritu. These questions are from Anurag Mitra of Sportskida. And the question is this: with the win in your upcoming fight, would you like to run it back with Bing Wen? रितु, क्या आपका जो जीत अभी होगा, इस जीत के साथ क्या आप वापस बिग विन के साथ लड़ना चाहोगी? बिल्कुल मेरी दिली तमन्ना है, और मैं बिल्कुल वन चैंपियनशिप से मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि बिल्कुल ये रीमैच एक बार जरूर होना चाहिए, और बिल्कुल मैं उसके साथ एक बार जरूर फाइट करना चाहूंगी. Yes, she says that a rematch with B is something that truly her heart desires, and she would want to request the One Championship team to allow her the opportunity to face B again in the circle. This next question from Anurag Mitra is this: fatigue seemed to be an issue in the later stages of your last fight. Did you address this issue in this fight camp? Jenny, I'm sorry. Let me repeat the question. This question is from Anurag Mitra again, and the question is this: fatigue seemed to be an issue in the later stages of your last fight. Did you address this issue in this fight camp? I'm sorry, I'll have to request you to repeat that again. No problem.
fatigue seemed to be an Fatigue, issue. okay. Fatigue. Sure. Sure. Okay, so रितु वो बोल रहे हैं कि आपके लास्ट फाइट में फटीग है, जो मतलब आप थोड़े थक गए, वो एक प्रॉब्लम था आपके लास्ट फाइट में, तो आप ये करंट फाइट में वो कैसे एड्रेस करोगे? बिल्कुल मैं मानती हूँ कि लास्ट फाइट में बिल्कुल तीसरे राउंड में मैं थोड़ा थक गई थी, लेकिन बिल्कुल आगे मतलब मैंने उस चीज़ पे हार्ड वर्क किया है और बिल्कुल लास्ट मैच में कुछ चीज़ें मतलब फाइट से पहले कुछ चीज़ें मेरे साथ कुछ घटित हुई जो मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन बिल्कुल मेरा अब इस फाइट में मेरा एंड्योरेंस काफ़ी, आप सभी देखेंगे मेरा एंड्योरेंस काफ़ी अप हुआ है और मेरी स्ट्राइकिंग भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है. Okay, Jenny, she says yes. While she agrees that in the third round, she was a victim of fatigue, but she says that there was something that happened within the personal realms that sort of shook her up during the match, but that's something that she'd not want to discuss on this forum. But yes, she's definitely worked on her strength, her stamina, and you're going to see a better version of herself in this fight. Last question before we let you go, Ritu. You've been very active last year and this year. Do you think that has worked to your advantage or disadvantage? रितु, आप बहुत एक्टिव रही हो एक साल से, लास्ट ईयर और ये साल, क्या ये आपके लिए काम किया है या आपके अगेंस्ट काम किया है? बिल्कुल ये मेरे अनुरूप ही काम किया है, तो बिल्कुल काफ़ी एडवांटेज मिले हैं और काफ़ी मेरे को और भी ज़्यादा मतलब इस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हूँ या Yes, it definitely has worked in her favor, and it's just made her stronger, and it's also given her more experience. That's all from us, Ritu. All the best. Thank you so much for your Thank time. Thank you. Thank you so much. That was the Indian Tigress Ritu Phogat. She'll be taking on Lin Heqin this Friday, July 30th. We have next joining us the former two-division